These are my good fellows Hashim Raza, Hafiz Shariar, Babur and Usman, Muhammad Usama Iftikhar. Today, our topic is ERP implementation. First of all, we talked about the introduction. We have focused main of ERP implementation of the organization implement on different phases, life cycles, processes, budgets, resources, and planning highlights. Then we talked about the scope of the project. Our focus on the ERP implementation. Make sure that all points are covered. Companies should be work with more effective different phases like project charters. Project charters, we talked about the majority of details, names, and project management. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम ये होता है जिसमें प्रोजेक्ट का नेम आता है और जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर अप्रूव करता है उसकी डेट को. देन वी टॉक्ड अबाउट द बिजनेस केस. अब बिजनेस केस क्या होता है? इसमें हम ये बताते हैं कि आपका जो आउटपुट है, मतलब आप किस चीज को अचीव करना चाहते हैं, आपके जो गोल्स होते हैं उस चीज के बारे में बिजनेस केस होता है. देन वी टॉक्ड अबाउट द कंस्ट्रेंट्स. इसमें टाइम आ जाती है, बजट आ जाता है और क्वालिटीज आ जाती है. अगर टाइम और बजट आपके पास ठीक है तो काम सेटअप है. अगर टाइम और बजट नहीं सही तो क्वालिटी ठीक है तो उसमें नहीं सही हो जाती, क्योंकि टाइम और बजट में ही फोकस ज्यादा करते हैं. और नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम डिफरेंट फेजेस करते हैं. फॉर एग्जांपल इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग, डेवलपिंग, टेस्टिंग एंड प्लानिंग. फिर उसके बाद आती है प्रोजेक्ट की डिटेल्स, जिसमें आपके पास सबसे मेन होता है इसमें डॉक्यूमेंट अप्रूव करवाना. किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपना डॉक्यूमेंट अप्रूव करवाना होता है. उसके बाद आती है आपके पास स्कोप मैनेजमेंट, जिसमें WBS, जिसमें हमने किया था इनिशियल प्लानिंग वगैरह. उसके अलावा आता है हमारे पास बजट रिक्वायरमेंट, जिसमें हमने बजट ERP इम्प्लीमेंटेशन उन कंपनियों के साथ करेंगे जिनका मीडियम साइज सही होगा. देन वी टॉक्ड अबाउट द कंक्लूजन. हम इस कंक्लूजन में हमारा यही है कि हमने जो ERP इम्प्लीमेंटेशन किया है वो हमारा सही हो, हमारा टाइम और बजट में सही हो. और जो अगर इसकी फ्लो की हम बात करें तो अगर ये टाइम और बजट हमारा सही नहीं होगा, सेंटर डिलाइजेशन होगी, तो हमारा जो ERP इम्प्लीमेंटेशन वो फेल हो जाएगा. 80% चांस हमारा फेल हो जाएगा. इसलिए हमें चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट और आउटपुट सेम रहे. Now I would like to call Hashim Raza to talk about the introductions about IT project management ERP implementation. Assalamu alaikum. I would like to introduction. Project based on ERP implementation is an organization. Different phases include in the project life cycle. Project has to go through several processes. Pros and cons of the project would be highlighted. Time period, budgeting and resource allocation of the project would be performed. Risk plan, a long-term management plan would be developed. Next slide. Scope of the project. The project is highly associated with the implementation of ERP system in the organization. Different requirements are to be gathered, ensuring that the resources gathered are allocated at the right place in the order to avoid any severe consequences. The ERP system must be implemented in the company in order to make their operations efficient and effective. Next slide. Duration of different processes. Initiation 7 days, planning 3 days, execution 2 months, monitoring and control 2 months, closing 3 months. Project charter. Project name implementation of ERP system in the IT department. This shows us the project sponsor,
Date of project approvals, description, scope of the project, business cases, constraints, project deliverables, and risks. Risks are in our project there are 80% risk of development failure in the requirements. The requirements are not checked properly as well as if the resources are not allocated at the right pace. Project management life cycle. This would be performed by Ahmed. Assalamu alaikum class. My name is Abdul. Now I am talked about the project management life cycle. First of all, project life cycle is depending on these factors in diagram you show. Implementation planning, next implementation of the system, testing of the system, developing and design of the system, and gathering requirements. Life cycle depend on these six factors. Now we talked about the plans of management, project management plans. First of all, we talked about the project detail and document control. First of all, our project name is ERP implementation in organization. Then we talked about the document information, and then we talked about the history, date, approval, role by Samay Kasar. डॉक्यूमेंट अप्रूवल करना जरूरी है क्योंकि जब तक वो अप्रूव नहीं होगा तब तक आपके जो ईआरपी एप्लीकेशन है जो आप लगाना चाह रहे हैं वो अप्रूव नहीं हो सकता. देन वी टॉक्ड अबाउट द फेजेस. फेजेस में आ जाते हैं हमारे पास इनिशियल प्लानिंग एग्जीक्यूशन. इनिशिएशन में ये होता है जिसमें आपके पास जो क्या इनिशिएशन शुरू में आप क्या करते हैं मतलब गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स करते हैं, डाटा आप कहाँ से कलेक्ट करते हैं, कहाँ पे देते हैं, और फाइनल वो होता है फाइनल गैदरिंग. मतलब आपका रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं आपकी, ये वो प्लानिंग में आप करते हैं एक चीज को प्लान कि मैंने ये करना है आज, मतलब सारा दिन मैंने आज ये करना है, ये आपकी प्लानिंग होती है. और इसमें रिसोर्सेज आपके पास कितने हैं उस हिसाब से आप करते हैं. और दूसरे मतलब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूशन, जिसमें आप बताते हैं कि आपका जो मॉडल का डिजाइन है वो कैसे है, आपने इस चीज को टेस्टिंग में कैसे इस्तेमाल किया ये वो. फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द मॉनिटर एंड कंट्रोलिंग. इसमें आप बताते हैं कि आपने अपने सिस्टम को कितना अच्छा तरीके से रखा है, कितना मेंटेन रखा है, और आपने अपने सिस्टम को कितना सपोर्टिव रखा है. दैट इज. एंड नेक्स्ट आखिरी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की है क्लोजिंग. क्लोजिंग में आप बताते हैं कि आपको कितनी एरर का सामना करना पड़ा, कितनी मुश्किलात आपको आई हैं, उस मुश्किलात से आप हटे तो नहीं. और नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट द मैनेजमेंट प्लान्स, जिसमें आपके पास नेम आता है, टाइम आती है, कॉस्ट आती है, क्वालिटी आती है, कम्युनिकेशंस आती है, आपके पास रिस्क आता है, अदर प्लान्स. अब ये नेम्स में हम बताते हैं कमेंट्स, टाइम आपका कितना लग रहा है, आपकी कॉस्ट कितनी लगी है, आपकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है कि बुरी है, काबिल है कि नहीं काबिल. फिर आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया कि आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका कैसा ताल्लुक है आपके साथ, अच्छा है बुरा है, टीम है कि नहीं है, स्टॉक होल्डर्स में भी आता है. अब रिस्क क्या है? रिस्क हमारे पास यही है कि हमें 80% जो रेट ऑफ फेलियर रखते हैं डिपेंड अपॉन सिचुएशन होता है. ये हमारा सारा जो काम डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन में करता है. देन वी टॉक्ड अबाउट द स्कोप. स्कोप ऑफ मैनेजर प्लान. हमारे इसका प्लान स्कोप क्या, ईआरपी इंटीग्रेशन क्या मकसद है इसको करने का. First of all, we talked about the detailed scope of document. Will include all major requirements that are gathering in order to implement the ERP system in the organization, and what input are being needed to ensure the desired output for the organization. फिर वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें आपके पास इनिशिएशन आती है, प्लानिंग आती है, एग्जीक्यूशन आती है, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्लेन वर्क डाउन स्ट्रक्चर. The VBDS will be created to ensure major phases involve the project. Every stopping will be have different techniques in order to implement the system, which is monitored in detail in the work progress. Level 1 इनिशिएशन में क्या आती है. इनिशिएशन में आपके पास ये आती है कि आप पहले उसको डाटा कलेक्ट करते हैं, गैदरिंग करते हैं, और फिर उस प्रोजेक्ट में जाते हैं. और रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम बताते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं और स्टेक होल्डर होते हैं. प्लानिंग में आपके पास प्लान करते हैं किसी चीज को करने के लिए, मेकिंग प्लानर एंड लोकेटेड रिसोर्सेज. रिसोर्सेज आपके पास कितने दिए वो देखते हैं. प्रोजेक्ट मैनेजर टीम्स होती है.
थर्ड में आप बताते हैं एग्जीक्यूशन। आपने एग्जीक्यूशन मतलब कितनी ज्यादा उसकी मतलब कितनी अच्छे से उसका डिजाइन तैयार किया, कितने अच्छे से उसका टेस्टिंग की है और उसका डेवलपमेंट होती। फिर आती है प्रोजेक्ट टीम्स। फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में आप मेंटेन करते हैं अपने सिस्टम को। मॉनिटरिंग मैनेजर होते हैं। क्लोजिंग में आप बताते हैं जिसमें आपके पास जो क्लोज कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम्स के बारे में बताते हैं। अब ये है जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जिसमें आप देख रहे हो कि हमारी टॉपिक जो था ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें हम बताते हैं प्लानिंग, डिजाइनिंग, सिस्टम डेवलपमेंट, सिस्टम डिजाइन, डॉक्यूमेंट एंड मेंटेनेंस। We have discussed in last slide also. Now I would like to call Sharia to continue further and talk about schedule teaming management. यस टीम मैनेजमेंट इसके अंदर हम शुरू में होता है हमारे पास प्रोजेक्ट इनिशिएशन होता है जिसके अंदर हम गैदरिंग ऑल द डिजायर्ड रिक्वायरमेंट्स एंड डिलीवरेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। सेकंड इज प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है, इसके अंदर डेवलपिंग डिफरेंट प्लान्स एंड लोकेटिंग रिसोर्सेज at the right place. And third is project execution होता है, इसके अंदर हम के अंदर development of the system design, perform testing, development of the system. Fourth is project monitoring होती है, के अंदर maintaining the ERP system along with checking for the ongoing support. And fifth is project closing, ensuring system working without errors or bugs and closing the projects. आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? आ रही जी, है। करो। नेक्स्ट इज कॉस्ट प्लानिंग मैनेजमेंट प्लान होता है, इसके अंदर डेटा बेस होता है, उसके लिए हमने $2,000 रखे होते हैं। सर्वर है उसके लिए हमने $1,500 रखे होते हैं। इंटरनेट $200 है। डेवलपमेंट्स ऑफ डिजाइन है, इसके लिए हमने $1,000 है। सिस्टम डेवलपमेंट होता है, इसके अंदर हमने $80,000 रखे हुए हैं। सिस्टम टेस्टिंग होती है, $40,000 रखा हुआ है, इसके लिए हमने इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसके लिए हमने 1 लाख रखा हुआ है। ऑनगोइंग सपोर्ट होती है, इसके लिए हमने $30,000 रखा हुआ है। प्रोजेक्ट क्लोजिंग होती है इसके लिए। तो ओवरऑल हमारा जो सा है वो 3 लाख एंड 3,700 हमारा जो पूरा टोटल कॉस्ट होती है वो हमारी बनती है। ओके नेक्स्ट। इसके अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान है, इसके अंदर हमारा वो सारी चीजें बताई जाती हैं कि हमें क्या क्या चीजें जो सी हैं वो रिक्वायर होती हैं। पर इसके अंदर टाइटल होता है ईआरपी है, हाँ डॉक्यूमेंट्स नेम होते हैं, डेट पेपर्ड होता है, और इसके अंदर चेंज रोल डिस्ट्रीब्यूशन बताया जाता है कि हमारे अंदर प्लानिंग चाहिए होती है, एग्जीक्यूशन चाहिए होती है, मॉनिटरिंग, क्लोजिंग, ये सारी चीजें चाहिए होती है। नेक्स्ट करिए यार। नेक्स्ट इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट प्लान होता है, इसके अंदर बताया जाता है कि रिस्क किस किस चीज के हमारे रिस्क होते हैं। इसके अंदर होता है डज नॉट मीट रिक्वायरमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट वेयर रॉन्ग, सिस्टम क्राइटेरिया नॉट मेट, इनकरेक्ट सिस्टम डिजाइन, इनसफिशिएंट बजट होता है, स्पिरिचुअल मैनेजमेंट इश्यूज होते हैं, फेलियर इन सिस्टम डेवलपमेंट होता है, डेटाबेस यूज इश्यूज होते हैं, और फेलियर इन डेवलपमेंट होता है, और प्रोजेक्ट प्लान डेफिसिट होता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, स्कोप एंड ग्रीफ होता है। तो ये सारी चीजें अंदर बताई जाते हैं। एंड द नेक्स्ट
Next will be present Osama Iftikhar, the SWOT analysis. Assalamu alaikum. My name is Soma Iftikhar. SWOT analysis. Strength, improvement of business processes, re-engineering of the business process, optimizing organization, operating costs, productivity in the organization workflow, effective and experienced staff responsible for implementation, establishment of a modern IT infrastructure. Next slide. Weakness, employees' reluctance to changes, employees' fear of constant control, user training dependence on the ERP consultants. Next slide. Threat. Opportunities, competitive advantage in the market, central workflow within the organization, optimization of all the business process under one centralized system, higher chances of productivity within the organization. Next slide. Threats, over budgeting of the implementation process, lack of proper user and training, 80% chances of failure during implementation phase, issues arise in development process. Next slide. Conclusion. Business process would be improved, re-engineering of the business process would be performed, data integration take place in the organization, competitive advantage for the organization. Somehow the organization will be dependent on ERP system, central database for the operation, higher chance of employee productivity, 80% chance of ERP implementation requirement must be considered. Next slide. Thank you. Thank you. ठीक है अब्दुल रहमान, रिकॉर्डिंग बंद